Madam, please begin. Okay, sir. Now I will start. Please. Thank you, our technical team. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of the Electrical Engineering Department at Parul University of Engineering and Technology Diploma Studies, who has clubbed all of us for webinar on design, development, and troubleshooting of innovative projects. I, Hetal Prajapati, head of electrical diploma electrical engineering, would like to present a gracious welcome to our expert Dr. K. Mukaria sir, other HODs who have joined, faculties and viewers. Let me introduce our today's webinar expert, Dr. K. N. Mukaria sir. He has worked as an electrical supervisor with JIT Engineering for 3 months at Reliance Industry Limited, as maintenance technician in captive power plant for 1 year, as HOD electrical in STPS Diploma Engineering College for 2.4 years, as lecturer in electrical department MGITR Degree Engineering College at Navsari for 2 years, as head electrical engineering department Sigma Vadodara for 1 year, as assistant professor and head electrical engineering department at Government Engineering College, Valsad for 4 years, as assistant professor electrical at Dr. S.N.S. Gandhi Government Engineering College, Mazura Gate, Surat for 6 years. At present, he is working as assistant professor and head of electrical engineering department at Government Engineering College, Valsad since 2018. Sir also worked as a head of electrical department, looking after coordinator at department activities at Government Engineering College, Valsad, working as an SSIP coordinator of institute, looking after activities of GTU Innovation Council. Throughout his career, Sir has handled portfolios like Hostel Warden Center of Excellence, Lab in charge for industrial process automations, PLC, SCADA, store and write-off committee members, training and placement officers, sports in charge, cultural committee in charge of building electrifications, development and maintenance of campus, Viswakarma Yojana coordinator for rural electrifications, etc., and being part of various committee at institutions time to time. Sir has very wide research portfolio. Sir has recently worked for doctorate work. He has completed and doctorate. He has designed an electrical vehicle battery charger with very compact design, adjustable, soft start, adjustable internal rump compensations, brownout detections and solutions to EMI and surge protections with a marker competitively priced. At present, at present, the SSIP funded research project work is going on. Sir, doctorate was completed from SVNIT Surat on 12th March 2020. So we have a very good expert for next 1 hour. So I just like to request all our viewers to be with us. And if any doubt, any query, please message me on my number 966-205-3087. So thank you once again. Thank you, sir, once again. Like now, I would like to over mic to you, sir. Thank you, Hetal ma'am. Thank you for the brief introduction. Thank you, Parul University, for providing an opportunity to interact with students, those who are just recently passing 12th standard, the diploma students of your institute, the online viewers of different engineering institutes at Gujarat. Ma'am, you can could you please verify that the broadcast is on, because one message is on Yes, screen. sir. Practice mode only. Audience can't see you until you are It is broadcast. sir, it is Should I started broadcast? the broadcast. So broadcast Yes, is already started, na? yes, sir. Fine, fine. So મારે અહીંયાથી કંઈ ક્લિક કરવાની જરૂર નથી ને એના ઉપર No, no, broadcast. sir. No, no. Okay, fine, fine, fine. So once again, afternoon to everyone who is attending this session. खास ये सेशन जो है आज वो किसके लिए है? स्टार्टिंग रिसर्च, जो कोई रिसर्च कर रहा है या किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे कहीं काम कर रहा है, तो जनरली होता क्या है कि वो सर्किट डिजाइन से लेके कुछ आगे बढ़ जाता है, फिर बाद में उसको ऐसा लगता है कि ये तो ऑलरेडी किया हुआ है,
या मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम मार्केट इसको लेके कैसे पेनिट्रेट करेंगे, ये कैसे देश और समाज को काम में आ सकता है. देन once he decides topic or institute has given him or her some topic, तो उसमें आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं. कैसे ट्रबल शूट करते हैं? तो बेसिकली फंडामेंटल, इफ यू वांट टू डू एनी माइनर और मेजर प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क, what are the things that is required, how to design the project, how to fully implement the project, how to get that project to the market penetration, and most obviously important for diploma students and degree students, that how to troubleshoot the project. For that, the basic understanding of your diploma engineering and degree engineering, that plays a very crucial role here. I am just sharing my today's presentation here, so you will come to know that in this 1 hour or 1.5 hour, we are looking for so many things here. So as the topic is design, development, and troubleshooting of innovative projects. Climbing up to the top demands strength, whether it is to the top of the Mount Everest or top of your career. It demands strength. Swami Vivekananda told that all power is within you. You can do anything and everything. So, for the country to become an Atmanirbhar, I'll be just Hetal ma'am just placing my camera off, because as it is through the mobile net, so it will consume the data, it will have some telecast interruption. Again, I'm back to my presentation. So, dear students and dear faculty members who are attending this session, any innovation that contributes to nation's economy, that contributes to environmental protection, that contributes in a direction of energy, will bring a nation a term which is known as Atmanirbharta. So innovation thrives when there is a unity in diversity. How young college students can contribute to society and nation to find opportunity in understand. What is the difference between innovation, invention, and creativity? Innovation occurs if someone improves on or makes significant contribution to existing product, process or services. It is not necessary that we do innovation. ये जरूर नहीं है. बहुत सारे जो हमारे श्रोता है शायद डिप्लोमा से है या गुजराती मीडियम में, so I will be using a mixed language. So आप प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हो, आप प्रोसेस में इनोवेशन कर सकते हो, आप सर्विस सेक्टर में भी इनोवेशन कर सकते हो. प्रोडक्ट इनोवेशन, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को बना सकते हो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर, जैसे हेतल मैम ने बताया, बेस्ड ऑन IoT बेस्ड स्ट्रीट, based on single phasing preventer for electrical motor. If there are some electrical students are attending here, you can do some service innovation, just like innovation for providing best services in the direction of environmental protection, in the direction of Ola and Uber, just like examples who are giving a service innovation. So बेसिकली ये दोनों शब्द में भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन? सो जब आपने पहली बार किसी चीज को आप लेके आए कुछ नए आइडिया या कंसेप्ट के साथ, तो वो इन्वेंशन गिना जाएगा. लेकिन जब आपने वो इन्वेंशन में माइक्रो एडिटिंग कर करके जो उसको प्रोडक्ट को आपने उसमें स्टेप ऑन बिल्डिंग किया, तो वो आपका इन्वेंशन है. 4 पहिए वाली जो व्हील चेयर है जो किसी ने पहली बार बनाई थी, तो वो उसका पहली बार जो है वो उसका इनोवेशन था. एंड उसके बाद ये चेयर कैसी फ्लेक्सिबल होगी, कैसा उसमें पुशबैक सपोर्ट होगा, कैसे वो उसमें कंफर्टेबली के लिए रोलिंग व्हील्स ऐड किए जाएंगे, तो ये जो है वो जो पहली बार जो उसमें जो चीजें इन्वेंट हुई, उसके बाद उसमें माइक्रो चीजें जो है वो ऐड होती गई. So if someone improves or on makes significant contribution to existing product, जैसे ये चेयर का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो इनोवेशन है. लेकिन पहली बार जो किसी ने किया वो इन्वेंशन है. क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू द रियलिटी. अभी हम 1-2 एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम सोशल बेस्ड इनोवेशन को हम आगे लेके साथ ले जा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम्स और आवर इमेजिनेशन रियलिटी इनटू अ प्रैक्टिकल वर्किंग थिंग्स the society and the nation.
So I was reading some headlines in last few days. One of the headlines was yesterday in Sandesh newspaper, देशમાં કોલસા સંકટ અનેક સ્થળે વીજ કાપની શક્યતા. So what they are stating, वो क्या बता रहे थे कि છેલ્લા 9 વર્ષમાં જે કોલસો ખાણમાં મળે છે, in Gujarati it was there. So there is a deficit here. So there will be a certain electricity deficit there. So the students who are working in electrical domain, solar energy, solar pumping system in villages and cities, these are very important for reducing the emission due to the diesel pump. So what are the existing government schemes are there? What new you can invent there? What new you can produce there? What are the things that your innovation will work in contribution of GDP of the nation, in reducing the energy demand, and obviously in reducing the greenhouse gases such as CO2, sulfur dioxide, then other some chlorofluorocarbon, and all those, the 6 greenhouse gases are there that you can reduce. So these are my contents of today's presentation. We started with innovation, invention and creativity for basic briefing, making the decision to form a business from the innovation, internal consideration to start a business, idea validation, मेरा आइडिया काम करेगा कि नहीं, मेरा आइडिया मार्केट में जा सकता है कि नहीं, comparison between the POC, prototype, MVP, and all those things. I'll be giving with 2 specific example. One is related to generalized all branch example, and second is related to electrical, EC and computer branch people, so they can know that how and how others can also put their foot here for So as I told, somebody wants to do something, then first point is कि I want to make a decision for a business. So can anybody tell me here that what will be the difference between an business and an innovative business, or what will be the difference between a business and a startup? Anyone here? I'll be switching towards the screen. यहाँ पे जो लोग मुझे अटेंड कर रहे हैं आज, can anyone tell me that what will be the difference between business and the routine business? No? Fine. So मान लीजिए कि I am to form a business. So what is the startup will offer? Whether the product or service satisfied a need of people, what is my market segment, what is the target segment that I want to hit, what is my market size, मेरा profitability कैसा रहेगा. सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कहीं गांव में से अगर आप कोकोनट लेके आते हैं और कोकोनट को आप होलसेल में सेल करते हो तो वो बिजनेस हुआ. लेकिन जैसे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोकोनट नाम का एक स्टार्टअप है, तो वो लोग क्या, वहां के जो गांव के जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, उनको उन्होंने वहां पे वो लोग अपने ट्रेडिशनल में इंटरेस्टेड नहीं थे. सो इन बेंगलुरु सपोज द कोकोनट वाज सेल्ड एट सपोज 35 रुपीस, एंड इन दैट विलेज द फार्मर्स वर गेटिंग लेस फॉर दैट. समबडी केम विद द कांसेप्ट ऑफ ई कोकोनट. उन्होंने गांव वालों को बताया कि आपको जैसे क्लाइंबिंग में आप इंटरेस्टेडली पेड़ पे ऊपर चढ़ के आप जैसे क्लाइंबिंग में आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो, तो दैट गिव्स यू एंजॉयमेंट, दैट गिव्स यू थ्रिल. सो दे प्रोड्यूस सम इनोवेटिव गुड्स टू जस्ट पुट देयर लक्स ऑन द ट्री. हाउ द कोकोनट कैन बी कैटेगराइज इन ए, बी एंड सी ग्रेड, उसको हम पेड़ पे से कब हमें साइंटिफिकली उतारना चाहिए. देन व्हाट इज एग्जैक्ट टाइम फॉर द मार्केट पेनिट्रेशन, द बुकिंग ऑन द इंटरनेट, so that the difference that the farmer was not getting and the price what the public was paying was cut down. So ये सारी चीज को लेके जब इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो जो है वो आगे जाके स्टार्टअप की परिभाषा में आता है. लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ कंडीशन दैट 10 साल में आपका जो सालाना बिजनेस जो 100 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर दैट. सो द इम्पोर्टेंट थिंग वाज द मार्केट नीड आइडेंटिफिकेशन, दैट आई वांट टू सी दैट व्हाट इज माय मार्केट एक्चुअली. मेरा मार्केट में गैप क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केट में किस एज या किस सेगमेंट को ये हिट करेगा. व्हाट इज माय प्रमोशनल पॉलिसी, व्हाट इज माय डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर मार्केटिंग मेथड्स आर देयर टू गेट इनटू द मार्केट. सो इंटरनल कंसीडरेशंस टू स्टार्ट अ बिजनेस इज अवेलेबल टाइम, पर्सनल रिसोर्सेस, रिस्क टॉलरेंस एंड रेजिलिएंट एंड फ्लेक्सिबल एटीट्यूड एंड मैनेजरियल सपोर्ट. आइडिया वैलिडेशन. आइडिया वैलिडेशन को 3 बाद में हम जाते हैं एग्जांपल पे, सर्किट एग्जांपल पे ही जाते हैं जो आज का थीम है.
दैट इफ आई हैव सम आइडिया, देन वो आइडिया काम करेगा कि नहीं वो हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में देखते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर से जो हमें मार्गदर्शन मिलता है उसको हम आगे जाके प्रोटोटाइप में बिल्ड करते हैं, एंड फ्रॉम सम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हु आर द मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स, उनसे जो हमें आइडिया मिलता है उसके बेस पे हम एक स्टेप आगे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में जाते हैं। कुछ कुछ बंदे जो है वो पीओसी स्टेज से प्रोटोटाइप स्टेज से एमवीपी में अगर उनको कॉन्फिडेंट है कि नहीं उनका प्रोडक्ट हिट है तो वो सेकंड स्टेज में भी स्टार्टअप के लिए या फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट, as I told, business plan is very important. Your market segment, your penetration, your plan, your advertising, your the marketing methods, all these things are very important in a business plan. So जब भी कोई पारुल डिप्लोमा में हमारे यहाँ या कहीं पे भी रिसर्च करता है तो ये सेकंड सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेज योर कंपटीशन ऑनेस्टली, सी हु आर द पीपल्स हु आर वर्किंग और हु हैव गिवन प्रोडक्ट in that domain, what is new of your product, what is versatility of your product, what is the cost competitiveness। अगर ये सब चीजें नहीं होता है और हम किसी चीज को इन्वेंट कर लेते हैं तब हमें लगता है कि जो हमने चीज बनाई है वो अभी किसी के काम की नहीं रही, क्योंकि उसका मार्केट सेगमेंट नहीं रहा है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं रहा है। इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान, आस्क फॉर ऑनगोइंग फीडबैक। जैसे मैंने बताया कि एमवीपी में आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, प्रोटोटाइप में आप इंटरनल स्टेक होल्डर की आप एडवाइस लेते हो, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मेक श्योर द प्लान फ्लोज नैरेटिवली फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, कीप द बिजनेस प्लान as perfect as possible. So for the marketing process, you need to know customers, company, what type of business you want to do, B2B, B2C, competitors, collaborators, and context. Same way, you need to know the products, place, promotion, and price. Four piece of marketing: goods, whether it is goods, services, futures, branding, whether it is a place might be a wholesale media, a retail media, a B2B, a B2C, promotional methods are there, and some profit methods are there. अब जब डिजाइन थिंकिंग में आप ये सब चीजें जब उतारते हो, what is the problem, what is the challenge, clearly articulate what you want to solve, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाने का प्रयत्न कीजिए। डिजाइन अ प्रोटोटाइप, जैसे हमने बात की, पीयूष टू प्रोटोटाइप टू एमवीपी, and then engage in continuous short cycle innovation process to continue to improve your design. So same way I have shown the design thinking process. Now from here on, two concepts I am discussing. One is with a smart dustbin and second is with a core electrical, that is based on how somebody can provide something from their diploma or degree engineering studies itself that innovation can produce, and how the troubleshooting can be done, how that product can be validated. So I initially I showed the newspaper regarding environment pollution. If the students of 12 standards, of the students of 11 standards, the diploma students and engineering students, those who can produce some gadget that can obviously reduce the waste and reduce the pollution, maybe it's air pollution, maybe it's water pollution, then obviously it is helping a society a lot, as I told from the newspaper cutting. So initially people use a food type of dustbin where we press the food and the lid was open, and press the foot and mechanically the hinge was open, और हम उसमें कचरा डालते थे। उसके बाद आया हम स्मार्ट डस्टबिन की बात करते हैं, where lid automatically opens based on the PIR motion sensor. Obviously कि यहां तक तो ये सीमित रहा कि भाई हमारा हाथ नजदीक आया, सेंसर ने उसे सेंस किया, ये फ्लैप यहाँ पे ओपन हुआ और हमने यहाँ पे डस्टबिन में कचरा डाला। लेकिन हमने यहाँ पे ये सुनिश्चित नहीं किया कि ये डस्टबिन जब भर गया तब उसको कौन लेके आएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ये यहाँ से कब उनको लेके जाएंगे। Second, we are not knowing that at how much level, at how much depth this dustbin is already felt, actually वो भरा हुआ यहाँ से। So पहले जो सिंपल मैकेनिकल टाइप का फुट बेस्ड डस्टबिन था, सपोज उसने किसी ने इन्वेंट किया था तो वो उसका इन्वेंशन हुआ, बाद में उसमें से माइक्रो चेंज होता गया। तो फर्स्ट हमने सोचा कि चलो यहाँ पे एक सेंसर लगा लेते हो, हमारा काम जाता है। सेकंड हमने सोचा यहाँ पे कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमें यहाँ पे
उसका उसका वेट भी पता चल जाता है कि कितना यहाँ कचरा भरा हुआ है, वेदर डस्टबिन इज फुल और पैकेज और एम्प्टी, वेदर इज अ पार्शियल फील्ड। और यहाँ से सेंसर है, वो हम जीएसएम से या इन फ्यूचर आईओटी से हम यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई हमारा डस्टबिन जो है भरा हुआ है, आप यहाँ से लेके जाओ। सो द व्हीकल पिकअप टाइम फॉर रीचिंग द डेस्टिनेशन, क्योंकि कैसा हो सकता है कि कोई कहीं कुछ अगर है तो कोई यहाँ पे ये जल्दी भर जाएगा, कहीं ऑफ सीजन है, त्योहार नहीं है तो ये कम रहेगा। So with the serial communication within GSM modem where SMS can be sent to the user at the receiving end to pick up the system through the IoT based system, it can be modified. So जब आप किसी प्रोजेक्ट को आप हाथ में लेते हो, तब आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप जो है वो प्रोजेक्ट ऐसे ही ले लिया कि कहीं आपने एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू किया है। आज की तारीख में जो ये लिटरेचर रिव्यू है वो दो तरीके से होता है। इन गूगल पेटेंट और एनी ऑफ पेटेंट डेटाबेस आप चेक करते हो कि ये सिमिलर काम किसने किया है। इन सम जर्नल पेपर्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर यू सी हियर कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस ने क्या क्या अप्रोच किया है, मेरा अप्रोच कैसा रहेगा, मेरा आइडिया वैलिडेशन कैसा रहेगा, और क्या मैं वो आइडिया वैलिडेशन से मार्केट को हिट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मनी, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन एनहांसमेंट, और बाद में उसको मैं स्केलिंग कर सकता हूं, बाद में उसको बड़े पैमाने पर मैं ले सकता हूं। सो आई शुड जैसे मैंने आपको पहली कुछ स्लाइड में बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट पे जब डिप्लोमा या डिग्री स्टूडेंट काम करते हैं तो उसका प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर सर्वे से लेके पैटर्न सर्वे से लेके मार्केट सर्वे से लेके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट या पैटर्न बनाने में या प्रोडक्ट बनाने में, प्रोटोटाइप बनाने में 1 साल अपना निकाला है, लेकिन 1 साल के बाद ऐसा पता चलता है कि ये चीज अभी मेरे कोई काम की नहीं रही या मार्केट में कोई काम की नहीं रही, तो उसमें कितने लोगों की मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है। सो the managerial aspect of the project is equally important as the technical part and the execution one. Then at which instance I want to install this, again I want to test and validate the data, and again I want to do that how I will be surviving in market for future enhancements. So आप एक सिंपल एल्गोरिथम से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से हमने कंट्रोलर में या किसी भी हमने रास्पबेरी पाई में प्रोग्राम लिखा। इनिशियली पीपल वर थिंकिंग चलो हम माइक्रो कंट्रोल में लिख देते हैं, प्रोसेसर में प्रोग्राम लिखते हैं। देन पीपल थॉट दैट यस वी कैन गो फॉर पाइथन आल्सो। सो दीज आर ऑल द मोड्स ऑफ प्रोग्रामिंग ओनली, बट योर बेसिक फंडामेंटल और फ्लो चार्ट विल रिमेन सेम। कि आपने चेक किया कि वेदर डस्टबिन आपका भरा हुआ है या खाली है, अगर हाँ भरा हुआ है तो आप उसमें फुल का मैसेज दे दीजिए, so that and then inform the municipal authority to clear the garbage। अगर नहीं तो यूज मी का इंडिकेशन आना चाहिए, तो जो बंदा उसमें डाल रहा है तो उसको भी पता चलेगा। ये मान लीजिए कि ओपन करके जब फ्लैग खुलता है तो भी वो भी देख सकता है कि हाँ कितना अंदर और स्टफ हम कर सकते हैं। वेदर एनी पर्सन इज नियर बाय टू डस्टबिन, यस तो लीड को ओपन कीजिए और डिस्पोज कीजिए। सो ये तो एक छोटा एल्गोरिथम है, इसमें आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन अपने यूजर के हिसाब से कर सकते हो। आपको इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है that whether that municipality command was municipal corporation command was sent, at how much interval they pick up the garbage from your site, what was the number of garbage picked in a year by implementing in programmable logic controller and operating your counter in any operation, or enhancing your controller counter in any operation। So एक सिंपल डस्टबिन से लेके आप उसमें इतने सारे मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम कर सकते हो। ये जो एग्जांपल यहाँ पे जो स्लाइड में हमने किया स्मार्ट बिन का, तो इन केस यहाँ पे उसमें स्प्रिंकलर जहाँ जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि आपका अगर कुछ वेस्ट ऐसा है कि वो वेस्ट वहां पे कुछ ज्यादा समय भी रह गया तो उसमें से एक आपको है वो जो हम जिसे हम दुर्गंध कहते हैं या उसमें स्मेल कहते हैं वो आ सकती है। सो आपने जगह जगह पे ये भी सुनिश्चित किया कि जब तक ये वैन जो है वो आपके यहाँ से ये गार्बेज अगर लेके नहीं जाता है तो ये यहाँ से तब तक जो है आपका ये चीजें जो है वो सुनिश्चित रहेगा कि वो एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं करता है। अब हर जगह स्टेटस ऑफ बिन को आप एड्रेस करते हो। अब हर जगह जिसको अब जो स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि सर हमें तो ये व्हीकल जो है उसको मैसेज देना है ऑपरेटर को कि यहाँ से बिन भर गया है। सो आप जीएसएम बेड से भेजो, आप आईओटी का
सर्वर यूज करो या आप किसी और मेथड से करो, लेकिन उसमें ये जो मैंने चीज बताई है कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों ने क्या किया, आप वो सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस कितना कॉस्ट कम्पिटिटिव है मार्केट में, वो सर्विस कितना इनोवेटिव है, वो सर्विस कितना फ्लेक्सिबल है कि जिसको आप काम जो है उसका आसानी से हो सकता है. सो somebody says that sir somebody is not able to see the messages every time, वो मोबाइल साइलेंट रखते हैं, so then at that time the voice messages can be given at an appropriate time if somebody is not picking the message actually. So number of modifications can be done, and these modifications will decide your final cost, and obviously this final cost is dependent on so many things. So these are the things that we have to take care. So an updated methodology I have shown here. So when the bin is filled, it will give the user the details of the empty bins which are nearby with the help of LCD display. This dustbin will generate voice message with the help of playback IC and speaker. Same way, implementation of smart garbage collection by using IR sensor and Raspberry Pi that I have already mentioned in one of the slides. So from a simple mechanical dustbin to a smart dustbin to an motion sensor to an ultrasonic sensor for measuring the weight inside the dustbin to an GSM based system for giving an SMS time to time to an IR sensor with Raspberry Pi application to an speaker and generated voice messages and to an IoT based system. You can see the smart garbage management systems goes on and on and on for modifications in the existing system. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया गया है, it gives a 3D graphs of waste placement within your containers, and it gives exactly अंदर क्या और कितना लेवल पे भरा है वो आपको मैसेज वो देगा. So unlike ultrasonic sensing technology, optical sensors have no blind spots from 0 to 4 meters, so allowing for accuracy in small containers. So if somebody is giving a multiple solution कि आपको प्लास्टिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, ग्लास वेस्ट, पेपर वेस्ट अगर एक साथ करना है तो आपका फ्लो मेजरमेंट का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और पेपर वेस्ट का अगर आप एक साथ लेके चलते हो तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, अगर आप कंटेनर में लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करते हो तो आपका तरीका क्या होना चाहिए. दिस many things can be done in an innovative way जो आपको सॉल्यूशन के लिए बताता है कि सर हमें इस प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए. वो नीड अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो वो कंसेप्ट जो है वो मार्केट में ही है. Hetal ma'am, there is one request from a participant that I think so Facebook and all the backup media is going on. Yes, sir. Apurva, Yes, sir? sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So he might be unable to join actually. Yes. That might be the issue. So यहाँ तक जो है हम बता रहे हैं स्मार्ट डस्टबिन के लिए. अभी मैं जो स्टूडेंट्स हैं जो आप जो वहाँ पढ़ाई में आपके यहाँ डिप्लोमा में है या डिग्री में है या बाकी सब स्टूडेंट है, सो यू कैन सी हियर, अगर आपने मार्केट समझे बगैर अगर आप बना दिया कि मुझे तो ये डस्टबिन बनाना अच्छा लगता है, तो आप ने ऐसा काम किया कि जिसमें आपका 6 महीना या एक बार 1 साल बिगड़ गया लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आया. सो इट इज ऑब्वियसली बेनिफिट द इंस्टीट्यूट, बेनिफिट टू द विलेजेस, एंड ऑब्वियसली दिस साइड ऑफ गैंट चार्ट शुड बी देयर. आपको अगर कुछ चीजें तैयारी करनी है तो आपको यहां से इस प्रकार का चार्ट बनाना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि मेरी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी, इन व्हाट पर्टिकुलर टाइम, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेंटरी टू प्रोटोटाइप डिजाइनिंग टू साइट विजिट टू टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग एंड टू फ्यूचर एनहांसमेंट. आप हम किस समय में हम ये कर सकते हैं. अब मैं आपको मेरे साथ में आपको मेरी एक पेंट की स्क्रीन शेयर करता हूं. एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, आई एम डिफाइनिंग वन प्रॉब्लम which can be a market driven. So suppose take an example of say or I can use the screen which is available on that कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है सब जानते हो. Can anybody tell me that for a fully automatic star delta starter, I'm just attending to the participant, I'm defining the problem where you have some scope of business. In a fully automatic star delta starter, which type of timer is used? Anyone? सेकेंड, मोटर में कभी आपके 3 फेज में से एक फेज चला जाता है, तो वो एक फेज अगर चला जाता है तो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसकी मार्केट प्राइस कौन सी है?
If anybody will give the answer, I'll be very happy. No one? Anybody thinks that it is all okay? No So in questions? chat box, I didn't receive any message. As receive, I Fine. will convey. चलिए मैं प्रॉब्लम डिफाइन करता हूं जहां से ये सेमिनार स्टार्ट होता है आपका कि फाइन सो I'll be using a paint screen to draw, or I'll be using some another screen which is available in this case. I think so. I'll be just using that media. So जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के 3 प्रकार है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक. कैन एनीबडी टेल मी दैट what is basically a semi-automatic starter, or what is basically a fully automatic starter? Anyone? चलिए मैं आपको एक कंसेप्ट यहां पे बताता हूं. Hetal, I will love to see some diploma students or degree student giving me answer. I am drawing a control circuit. Fine. This is a stop push button. This is a start push button, and when I am pitching the market, that you can see here from the problem, I am defining a problem. This is the start push button. This is line normally open contact. This is star normally open contact. यहां से जाके ये कार्यक्रम जो है वो आपका सही मायनों में लास्ट तक, जैसे एनवायरमेंट का हमने कंसर्न लिया, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे. देन लाइन कॉन्टेक्टर and line contactor to any one phase. So suppose it is connected between R and Y phase. From here, I am putting one interlock NC of delta contactor. ये आपका coil है star का, and obviously you are giving a connection here. Now from here there is an interlocking. A star NC is put here. A delta coil is put here and Y phase. This is the control circuit of a semi-automatic starter. I will be converting into a fully automatic also. But see the problem. यहाँ पे जब मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे स्टार कॉइल को सप्लाई मिला, यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ, सो यहाँ से लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ. सो आपकी पावर सर्किट में लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप होगा. Once star is on, this normally closed contact will remain open, so delta will not be picked up. सो जहां पे जब तक मैं यहां पे इसको पकड़ के रखता हूं, जब तक मेरा हाथ इस पे है, ये पुश बटन पे, तब तक ये स्टार में ऑपरेट होगा. जब मैंने हाथ यहां से ले लिया तो यहां से स्टार जो है वो ड्रॉप होके यहां से डेल्टा ऑन होगा. इसका डिस्क्रिप्शन यह था कि आपने किसी सिक्योरिटी या किसी को बोला कि आप ये जो है पानी का मोटर सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर से ऑन कीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि उसको पता नहीं है कि ये 60 सेकंड में या 30 सेकंड में कितने सेकंड में उसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है. तो ऐसा हो सकता है कि वो हाथ पकड़ के रखता है. एंड देयर इज अ थंब रूल और लॉ दैट योर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी वेल कैलकुलेटेड. अगर वो नहीं होता है तो यू लॉस द पॉइंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. नाउ सी, उसको हमें नलिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर फुली ऑटोमेटिक स्टार्टर आई हैव पुट वन NO of star here. I have put one latching here. Then from here line NO, delta NC, टाइमर, न्यूट्रल. इसकी सीरीज में हम टाइमर का एक NC कॉन्टैक्ट रख देते हैं. सो नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू हियर, दिस इज NC कॉन्टैक्ट ऑफ टाइमर. ये जो टाइमर है ये मार्केट में मिलता है, वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है. अगर ये टाइमर को मैं किसी बेसिक टाइमर से जो मैंने डिप्लोमा या डिग्री की स्टडीज में मैंने अगर पुटअप किया है उससे मैं रिप्लेस करता हूं तो माई कॉस्ट विल बी सेव्ड. सो अगर मान लीजिए कि ये 300 रुपए में मिलता है और मैं किसी प्रोडक्ट को 20 रुपए या 50 रुपए में यहाँ पे सजेस्ट करता हूं विद इक्वल वेराइटी, तो वो काम करेगा कि नहीं, लेट्स सब वो चेक करते हैं. यहां से प्रेस किया, स्टार कॉन्टेक्टर पहले पिकअप हुआ, टाइमर अभी पिकअप नहीं है, सो NC NC ही रहेगा.
सो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ही रहेगा। यहां से जैसे मैंने इसको पिकअप किया तो पहले स्टार पिकअप हुआ तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ, सो यहां से लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ। लाइन कॉन्टेक्टर पिकअप होने के बाद ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ, सो यहां से टाइमर पिकअप हुआ। टाइमर पिकअप होने के 5 सेकंड के बाद ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, तो स्टार बंद हो जाएगा और डेल्टा चालू हो जाएगा। जैसे डेल्टा चालू होगा तो यहां से क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन होकर यहाँ टाइमर का कॉन्टेक्ट जो है कट जाएगा, लेकिन इसका कॉस्ट जो है मुझे यहाँ पे अभी बेयर करना पड़ रहा है। फाइन, दैट्स अ प्रॉब्लम। आई होप सो दैट एवरीवन गॉट दिस प्रॉब्लम। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर से मैं बताता हूँ। I have just put one modification. I have put here one NO of star and one timer here. Now see what modification is done in the circuit here. So what we are trying to see here, that I want to give two solutions here at a time. That we'll see is it feasible or not. Fine. Is it market competitive or not. So यहां से हमने दो सॉल्यूशन एक साथ दिए ये सर्किट में कि मुझे यहाँ पे एक प्रिवेंटर सर्किट लो कॉस्ट पे या रिलायबल सर्किट देना है, उसके साथ जो है मुझे सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर देना है। तो ये जो पाथ है अभी प्रोजेक्ट में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पाथ है दिस इज बेसिकली माय स्टैटिक स्टार्टर विच इज बेस्ड ऑन IC 555 का कंसेप्चुअल ऑपरेशन जो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये IC 555 में जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हो तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसको यही पता नहीं है कि इसका मोनोमोड क्या होता है, उसका एस्टेबल फ्री रनिंग पीरियड क्या होता है, उसका ट्रबल शूटिंग क्या होता है, उसमें ये रिले को कैसे चेक करते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर या मॉसफेट आपने यूज किया है तो उसको कैसे चेक करते हैं और उसको ऑपरेट कैसे करते हो। सो नॉर्मली ये केस कैसा है कि यहाँ से RYB जा रहा है और यहाँ से जो मेरा टाइमिंग साइकिल है वो ये RC नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये रिले जो है वो ऑन होगा कि नहीं वो डिसाइड होगा। सो वंस आई डिसाइड कि मुझे 30 सेकंड में ये यहाँ से उसका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस से ये चार्जिंग टाइम कंट्रोल करके 30 सेकंड्स में मुझे स्टार शूट डेल्टा चेंज ओवर करना है, तो नॉर्मली यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके कॉमन टर्मिनल को मैंने यहाँ से दिया हुआ है। सो आइदर दिस न्यूट्रल will be getting to star contactor or it will be getting to delta contactor, जहां फेस तो ऑलरेडी उसको मिल ही रहा है, लेकिन एट अ टाइम स्टार को न्यूट्रल मिलेगा या डेल्टा को न्यूट्रल मिलेगा वो डिपेंड्स करेगा कि ये जो टाइमर है वो कैसे काम करता है। टाइमर डिसाइड करेगा कि ये कंपोनेंट वैल्यू कैसे आपने ली है और वो कंपोनेंट वैल्यू से आपको पता चलेगा कि यहां से आपने आगे सर्किट का चेंज ओवर क्या लिया है। फाइन, सो ऑब्वियसली योर पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क जो है, जो ये साइड है जो टाइमिंग डायग्राम डिसाइड करेगा, और ये साइड जो है वो आपका 2/3 VCC और 1/3 VCC के बाद ट्रांजेक्शन कैसे होगा वो डिसाइड करेगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं प्रोजेक्ट में कि पहले तो ये जो है 2/3 VCC 1/3 VCC क्या है वो पता नहीं है। ये 555 परचेज कर लिया एक छोटे एप्लीकेशन के लिए, लेकिन उसमें इंटरनल पार्ट्स SR फ्लिप फ्लॉप से लेके कौन से पार्ट्स है उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं वो पता नहीं है। उसके बाद ये कब अपनी स्टेट बदलेगा, क्या मैं अपने मोटर को स्टार या डेल्टा में अपने अनुकूल समय पे ला सकता हूं वो पता नहीं है। जब आप कैपेसिटर का वैल्यू फिल्टरिंग के लिए लगाते हो तो वो आपको पता नहीं है। सो obviously the circuit should be tested in electronic workbench, or when you put some component it should be tested on CRO to see the effect of the different components you have selected, the PIV value you have selected। मान लीजिए कि आप 10 वोल्ट पे करते हैं तो 10 into √2 इतनी वैल्यू का कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे देखना है। दिस इज अ प्रिवेंटर सॉल्यूशन, वेरी लो कॉस्ट। दिस वाज डिजाइन फ्रॉम एन ओपन डेल्टा प्रिंसिपल ऑफ योर मशीन लैब। मशीन में आप ट्रांसफॉर्मर में वीवी बैंक किसे कहते हैं कि जब 3 फेज बैंक में किसी एक बैंक का कनेक्शन अगर टूट गया है तो वो रिड्यूस कैपेसिटी पे चलाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि 10-10 केवीए के 3 ट्रांसफॉर्मर है तो अगर 30 केवीए लोड है तो वो 20 केवीए हो जाएगा, लेकिन वो 20 केवीए नहीं होगा, वो टोटल कैपेसिटी का 20 केवी का 57% या टोटल का 86% कैपेसिटी पे ऑपरेट होगा जब भी वीवी कनेक्शन होगा। सो सी द लॉजिक हियर that when I am giving R/B here and this is my common neutral, this is connected in 2-1 connection. So when I implement here in 2-1 connection, I should also know that when in which condition this will be showing additive polarity and when which condition it will be showing subtractive polarity. So I have to go for a subtractive polarity because in normal condition when R/B is coming here at that point the voltage at this point is 0. Now once the voltage is
at this point is 0 and there is some unbalance in the state supply. So यहाँ पे किसी एक फेज में अनबैलेंस हुआ तो वो 8 या 7 वोल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो उसका आपका डीसी वोल्टेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, उसके बेस पे ये रिले पिकअप होगा. So in case of relay, you can see here for preventer. So in case of relay here, suppose I am giving here a phase from, say this is my phase at this point, or this is my neutral. Say at this point a common NC and NO, three terminals are there. At this point I am giving a neutral here. So obviously the neutral is getting to the contactor, और फेज कॉन्टेक्टर को भी मिल रहा है और फेज लैम्प को भी मिल रहा है, लेकिन एट टाइम न्यूट्रल जो है वो जब ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा तभी मिलेगा. जब लाइन में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा तब ये कॉन्टेक्ट यहाँ से एनसी की जगह एनओ पे आ जाएगा, तब ये इंडिकेटर ऑन होगा. सो व्हाट वाज द कांसेप्ट हियर? द प्रोडक्ट which is based on negative phase sequence operation that we are studying in switchgear and protection. क्या हम उसको ओपन डेल्टा बेस प्रिंसिपल से किसी प्रिवेंटर को हम बना के उसमें ऑपरेट कर सकते हैं? तो दिस वाज टेस्टेड ओके several times in lab and it is working. Now second step is how to make it market compatible or how to complete the total design. So this was only the first part. Now बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं, इसके अंदर कहीं जाना नहीं चाहते वो कि ये कैसे बेसिकली काम करता है, उसको मैं ट्रबल शूट कैसे करूंगा. सो एट दैट टाइम when you design this state starter, for that I should be first calculating that at which transaction time for best energy conservation ये 60 सेकंड में ट्रांजेक्शन होगा या लेस देन 60 सेकंड में ये ट्रांजेक्शन होगा, C3 कब ऑपरेट होगा स्टार मोड में या C2 कब होगा. So when C1 is charged to 1/3 VCC, the output goes low, energizes the relay, which changes the contact and hence the motor connection. The LED is on during the charging period. So I should know what I'm using. I'm using a 555 application for simple classroom timer or for this application of a static starter. So at that time, what logic I'm using, what are the features of timer, what are the pin diagram, how the SR flip-flop will be working internally. अब अभी किसी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे बताया है, किसी भी ट्रांजिस्टर इंटरनल ट्रांजिस्टर ऑन होगा ये कैसे पता चलेगा? So when your switch is on, the voltage across collector and your ground will be 0, and when switch will be off, it will be VCC. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से ये टॉगल होके इसको बेस बायस मिलता है, यहाँ से इसको बेस बायस मिलता है. So depends upon that 2/3 VCC and 1/3 VCC, that state will be continuously changing, and that is shown here in this diagram. Say आप जब यहाँ से आपने जो आपके नेटवर्क से आपने यहाँ से 2/3 VCC ऑन सेट, अगर वो वोल्टेज है वो आपका ज्यादा है तो यहाँ से आपको ऑन मिलेगा तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज 0 होगा, सो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. लेकिन ये जब ऑफ होगा तब ये, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तब ये वोल्टेज चार्ज करेगा. तो जब उसका 2/3 VCC और 1/3 VCC का जो इसका वैल्यू है उसके हिसाब से ये टॉगल वैल्यूज आते रहेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के जरिए. So again, I am showing the third diagram for more clarity of that working, that where that 2/3 VCC is there. So यहाँ पे वो 2/3 VCC होगा और यहाँ से 1/3 VCC के नीचे जाएगा, तब ये आउटपुट चेंज होगा. तो जब ये आउटपुट जो है 3 नंबर पे हम टॉगल करके ले रहे हैं, तो उसे हमें रिसेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसे हमें आगे देखना है तो कैसे कर सकते हैं. सो ये एक इन्वेंशन था कि जिसपे हमने प्रयत्न किया कि हम जो हमने डिप्लोमा या डिग्री में जो पढ़ा है उसके बेस पे हम क्या दे सकते हैं. दिस इज अ वेरी ह्यूज इनोवेशन और इन्वेंशन. अब इसमें क्या था, बेसिकली दिस वाज बेसिकली अ पीएलसी. सो नाउ यू कैन सी बिफोर गोइंग टू दैट पीएलसी आईओटी बेस्ड स्ट्रीट लाइट, आई शुड नो व्हाट कंपोनेंट आई एम यूजिंग, व्हाट इज द कॉस्ट. ये 160 रुपए में सर्किट पड़ता है, 160 रुपीज, और वो प्रिवेंटर को मिला के 220 में सर्किट कंप्लीट होता है, 220 रुपीज में ये या 230 रुपीज में ये सर्किट कंप्लीट होता है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर? इनिशियली वाइल कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करूं उसके पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच या किसी और में देखना है. अगर उसमें नहीं देखता हूं तो मैं ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करता हूं, तो ऑल इंडिविजुअल वैल्यू शुड बी शोन ऑन द बेसिकली सीआरओ. देन कम्स द ट्रबल शूटिंग पार्ट, देन कम्स द टेस्टिंग पार्ट. अगर यहाँ पे मुझे ये 3 नंबर पे मुझे पल्स नहीं मिल रहा है तो मुझे सीक्वेंस में क्या क्या चेक करना पड़ेगा. हाउ आई कैन चेक दिस रिले इन द लेबोरेटरी. इंडिविजुअल 6 वोल्ट देके 8 वोल्ट देके मैं कैसे कर सकता हूँ. नाउ यू कैन सी the next innovation. It is very huge as compared to what I was shown. It is patented. This is patented. Now this was recently patented at 2 months above. ये क्या दिखा रहा है आपको कि जब मैं PLC IoT बेस्ड स्ट्रीट लाइट जो मैं कर रहा हूं
उसमें मेरा स्ट्रीट लाइट ये है कि जो इनकमिंग व्हीकल है वो कितनी स्पीड से आ रहा है उसका काउंट अपडेट कर रहा है पीएलसी में। S7 1200 पीएलसी था। अल्ट्रासोनिक सेंसर और आईआर सेंसर जो है वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जब कोई व्हीकल आएगा, ये आपका हाईवे का ट्रैक भी हो सकता है, या आपके गांव का ट्रैक भी हो सकता है, या आपका विलेज का ट्रैक भी हो सकता है। तो उसके साथ साथ ये जब होगा तब ये लाइट कैसे ऑन होगी, तो ये हमने दो तरीके से इंप्लीमेंट की। एक तो कहीं रोड में ये छोटा सेगमेंट है, तो यहां से जब व्हीकल आएंगे, तब जब व्हीकल यहां से आएंगे तब ये स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन होगी, और सब अगर ये सेगमेंट बहुत कम है तो पूरी गाड़ी यहां से पास हो जाएगी, बाद में वो ऑफ होगी। सेकंड सेगमेंट में जहां पोल के बीच में, स्ट्रीट लाइट पोल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब यहां से कार आएगी तब उस केस में जब when the car will be coming here, at that lamp will be on. When the car is passing from the street light, the lamp will be off, and again ये जैसे आगे बढ़ जाएगा तब ऑन ऑफ होता जाएगा। when इन इंडिया सपोज देयर इज नॉट अ सिस्टम कि अगर ये स्ट्रीट लाइट बंद करना है तो क्या करें, तो हर एक पोल में आप देखो नंबर ऑफ सेंसर क्या क्या फिट किए। फायर सेंसर पुट किया है, पीआईआर सेंसर है, रेन सेंसर है, फॉग सेंसर है, फाइन। सो नाउ व्हेन द एलडीआर एट दिस अपर माउंटेड स्ट्रीट लाइट इज नॉट शोइंग द रिजल्ट, एंड व्हेन सपोज द स्ट्रीट लाइट इज नॉट वर्किंग, इमीडिएटली the system manager will be informed कि आपके सब 10 street light में से your second number or third number street light is not working, so it has to go on for maintenance. The warranty period details with lumens details is already fed into the computer. It is showing that how many lumens all the systems are consuming, all the street lights are consuming, and whether the consumed lumen is reach the lumen that is crossing the edge of the tube light of the LED light, like that. Next, when say at our institute, so many faculties are having a duty of disaster management, and in COVID protocol we want to identify कि यार रात को अगर 11 बजे का परमिशन नहीं है तो कौन कौन जो है अभी बाहर निकला है। So there is a camera image here. So camera image is going up, giving a picture how many students are sitting under the street light, and they are intimating the district collector office and the higher office that ये बंदे जो है अभी रात को घूम रहे हैं, आपके कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। So now you can see the street light which was a fixed लाइट सिस्टम जिसको हमने टाइमर से शाम को 6:45 बजे चालू किया और सुबह हमने बंद कर दिया, उसको हमने वेरिएबल लाइटिंग दिया, वो डिम फुल हो रहा है, उसका वोल्टेज वेरी हो रहा है। सेकंड, वो स्ट्रीट लाइट से हमने कोविड प्रोटोकॉल मॉनिटर किया। सेकंड, वो यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट के आजू बाजू में कहीं कहीं कोई एरिया है, फैक्ट्री के आजू बाजू में स्ट्रीट लाइट जा रहा है, कहीं फायर हो रहा है तो फायर का अल्टीमेशन भी वो दे रहा है। हमने जैसे आरटीओ से यहाँ से इंफॉर्मेशन मांगी कि यार जो भी गाड़ी जो है आपके हिसाब से ब्लैक लिस्ट में है, इफ दैट व्हीकल नंबर प्लेट इज ट्रैवलिंग एट माई रोड्स, then that is immediately reflected from the IoT to the main server to the receiving end. वो बताता है कि यार यहाँ से कोई गाड़ी ऐसा पास हुआ है। If some car has not cleared the stack, then your PLC counter will give information कि ये गाड़ी यहाँ से गया है लेकिन यहाँ से निकला नहीं है in this much time. So the accidental vehicle management system will get the intimation that please check that something has been operated in the street light. Then डिजास्टर मैनेजमेंट में एक ड्यूटी हमें ये रहती है कि हम रात को चेक करते हैं कि हर एक जगह पे बारिश कितना हुआ है। सो ऑब्वियसली माय रेन सेंसर गिव्स मी द इंडिकेशन, एंड एट माय डेस्क इट इज शोइंग कि ये जगह पे रात को इतना mm बारिश हुआ। सो इन द सीजन ऑफ मई, जून, जुलाई, इट गिव्स द आइडिया दैट ये जो है वो मुझे करेक्ट फिगर दे रहा है कि मुझे वहां पे कहीं किसी से मुझे फोन पे डेटा मांगने की जरूरत नहीं है। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो हम यहाँ वलसाड़ में फोन से डेटा लेते हैं कि ये जगह पे बारिश कितना हुआ, और हम उसको वहां गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखते हैं। सो दिस इज वेरी वन गुड कंसेप्ट व्हिच वाज शोन। इट वाज शोन कि आपको ट्यूबलाइट फिटिंग में तो उतना खर्चा लग ही रहा है, तो ट्यूबलाइट के साथ हम कोई इतना सेंसर, हम ये 5 या 6 सेंसर जो लगते हैं उसको लगा के वी कैन use this tube light for disaster management, we can use this tube light for COVID protocol management, we can use this tube light for intimation of fire and all those things, we can use this street light for street light preventive management system कि अगर कोई लाइट बंद है तो वो सेंसर वो सेंस करके रिसीविंग एंड पे देता है। we can use this street light for finding what is the rain in the nearby area। अब इसका मार्केट क्या है, कोई बता सकता है इसका मार्केट क्या है? अगर ये हाईवे अथॉरिटी है, if this is a highway authority, then obviously the rain will not be concerned to me. But if it's the area under the disaster management authority, then obviously rain will be concerned to me. If suppose it is a zone of Vapi where the industry is in the bulk amount, then this fire will be also concerned. So the things are kept
अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड। मार्केट में से जो बताता है कि साहब हमें हमारी ट्यूबलाइट में इतना ही पॉइंट चाहिए, तो हम जो है ये आप ये 9 चीजों के साथ या 10 एप्लीकेशन के साथ सिस्टम ये बिल्डअप करके दे रहे हो, लेकिन हमें तो इसमें से 4 या 5 चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट my promotional plan will be there according to the schemes. This is my scheme 1, this is my scheme 2, this is my scheme 3. This was basically how we configured the PLC S7 1200, and all things were there. So before going to the next topic, I'll be coming again back to the screen if somebody has some doubt. So you can see कि innovation जो है वो कहाँ से आया था, whether I directly did innovation. No, from Google patent and all those patent database search, I did observe that worldwide what has happened till date for street light. आज की तारीख में स्ट्रीट लाइट में क्या क्या हुआ है, तो आई गेट सम मैसेजेस कि हाँ स्ट्रीट लाइट का लाइटिंग इंटेंसिटी वेरिड कहाँ कहाँ पे हुआ है, लेकिन जो मैंने 9-10 फ्यूचर जो बताया है वो नहीं हुआ कहीं पे। Did I get the papers from that? Yes, I do read the papers, for journal papers for that, and I didn't find that application. That's why the patent was immediately published, and at present it might be in examination stage. And third, what was the need of the market? Really, the market need was really felt actually, that suppose that street light is an area which is surrounded by a factory. A street light is an area where there is a district management authority needs some control, because otherwise रात को उनको गाड़ी लेके घूमने के लिए निकलना पड़ेगा कि वो वॉच करने के लिए कि कौन अभी घर से बाहर निकला है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करता है कि नहीं है। then fire proof area. Then, as I told, that in every 4 months at the rain time, we have to give a figure at the disaster management office that what is the rain across these areas. And obviously, if this system is giving everything in auto mode and there is a fail safe operation, अगर ये बंद हो जाता है तो उसका बैकअप क्या है, अगर ये देते हैं तो ये मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? Hetal ma'am, what time No, is sir. with me still? Sir, at 3:30 we have to end, but you can take time. You can take how much So, time you would require to end the session? 3:26 is there. I'll be just concluding in 5 to 10 minutes. Okay, sir, no problem. Take that. Fine. So students, please आप समझिए, इंजीनियरिंग में बेस्ट इनोवेशन कब आता है कि जब मैंने आपको बेसिक बताया था IC 555, वहां से लेके मैं स्मार्ट डस्टबिन से लेके IoT से लेके from there we have gone through a PLC IoT based street light with a versatile sensor and all those things. So ये चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि जब मुझे लगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में किसी 300 या 350 रुपए का जो टाइमर है वो इजीली अगर IC 555 बेस्ड टाइमर से रिप्लेस होता है, तो मुझे पहले तो POC में ये देखना है कि हाउ रोबस्ट इज दैट। वो कैसे, पहले तो ये देखना है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, आइडिया इंप्लीमेंट होगा कि नहीं। अगर जवाब यस में मिलता है तो सेकंड थर्ड स्टेज पे मुझे ये देखना है कि व्हाइल रिपीटेड ऑपरेशंस व्हाइल टेस्टेड एट लैब, हाउ डज इट रिस्पॉन्स एक्चुअली, मेरा कंपोनेंट सिलेक्शन कैसा है, मेरा बाकी सब चीजें कितनी, मेरी रॉबस्टनेस कैसी है, हाउ इट ऑपरेट्स, देन कम्स द बेस प्राइस एंड ऑल दोस थिंग्स, देन कम्स द मार्केट पेनिट्रेशन, ऑल दोस थिंग्स. So next example, I first gave example of the smart dustbin, then I gave the troubleshooting and all those things of the preventer and the static starter. Well, students are selecting the devices just like transistor, capacitors and relays. They should know that ट्रांजिस्टर को मुझे चेक करना है तो बेस बायसिंग तो आप ऑफ में चेक कर सकते हो, लेकिन इट्स वेरी सिंपल कि अगर वो ऑन है तो इट इज वर्किंग एज अ स्विच, सो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड ग्राउंड विल बी जीरो, व्हेन इट इज ओपन इट विल बी VCC, एंड while you are saying IC 555, so what is a 2/3 VCC and 1/3 VCC? That depends on your selection of VCC. Selection of VCC will be between 5 to 18 volt. So that everything is a design part. So पहले तो आया नीड था तो यहाँ था, क्यों, क्या नीड था, तो कि ये कॉस्ट था, मुझे ये कॉस्ट से रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो टाइमर IC से रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है, तो ये उसका पाथ रहा, वेदर वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, यस, वेदर वो रोबस्टनेस है। अगर यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ तो मैं गलती करता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ से MVP में आगे जाके मुझे रियलाइज करना है कि इसमें मार्केट में अगर मैं इसको लेके जाना चाहूँ तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। सिमिलरली PLC IoT बेस्ड स्ट्रीट लाइट सिस्टम फॉर management control system was also done with so many issues we collected from nearby institutes and nearby centers and all those things where we actually were given a duty. So where there is some society need that for to penetrate,
द इंजीनियर्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन वो फंडामेंटली अगर जाते हैं तो वो चीजें जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। आई विल बी कमिंग बैक टू द कंक्लूजिंग साइड। सो जब कोई इनोवेशन या आइडिया लेके स्टूडेंट्स फैकल्टी के पास आता है, तब बेसिकली फॉर्म, फ्यूचर और ये तीनों में से फॉर्म, फ्यूचर और एप्लीकेशन कोई दो चीज है तो फैकल्टी उसको यस कहता है कि यस हाँ तुम आ जाओ, यहाँ पे आपका काम जो है वहां पे बढ़िया तरीके से हो सकता है। फाइन। सो एंड इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स दे हैव फंडामेंटल व्यू लाइक कि अगर फॉर्म फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स अगर 2 साल तक अपना स्टार्टअप में या अपने इनोवेशन में देना चाहते हैं तो बाकी सब तो उसको मेंटर प्रोवाइड करके हम कर सकते हैं। सो ये दोनों कंसेप्ट जो अपनी अपनी जगह पे सही है। सो वंस योर आइडिया इज फिजिबिलिटी इज चेक कि काम करेगा कि नहीं, वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में देखा जाएगा। डिजायरेबिलिटी इज देयर, यूजर डिजायरेबिलिटी इज देयर, वो प्रोटोटाइप में देखा जाएगा। और यूजर फीडबैक को लेके आप इसको यहाँ पे इंप्रूव करना चाहते हो तो वो देखा जाएगा एमवीपी में। So I have shown all the comparison point also, but I think so time is less. So I'll be just running in just 5 or 10 minutes. I have to complete this. So startup, as I told, it is a newly emerged business venture. So most important चीज है, it's a viable business model to meet a marketplace. So यहाँ दो चीजें बहुत important थी, एक marketplace और second viable business model, जैसा हमने बताया यहाँ पे. So with an annual turnover not exceeding rupees 100 crore for any of the financial years, it can be incorporated as a startup. So on completion of 10 years from the date of incorporation, it will not be in a startup definition. If its turnover of any previous year exceeds rupees 100 crore, then also it will be not in case of startup. You will get the tax exemption. आप अगर ये चीजें स्टार्टअप में लेके स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होते हो तो डीपीआईटी में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको सेक्शन 80 आईएसी में आपको टैक्स एग्जम्पशन रहेगा। You will be having very benefits of great benefits of tax exemption। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में ये चीजें होनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजुलेशन, एनुअल अकाउंट्स फॉर स्टार्टअप, इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। आपको यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन अंदर सेक्शन 56 जो है उसमें आपको मिल सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी भी मैंने बताई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। सो आई एम गोइंग, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट दीस आर सम बेनिफिट्स यू आर गेटिंग। अगर आपका कंपनी जो है वो किसी प्रॉब्लम में और समटाइम्स यू आर इन डबल माइंडेड एंड यू वांट टू जस्ट क्लोज द थिंग्स, then as per the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, it can be closed easily for that, and it can be wound within 90 days of filling an application for an insolvency. Easily public procurement norms उसको परचेज करने के लिए, एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स जो उनको ये बेनिफिट मिलते हैं। IPR benefits up to 80% IPR filing benefits will be there. You will be getting a benefit of labor laws and 3 environment laws. Self certification, आपको किसी सर्टिफिकेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको 5 साल के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी चला सकते हो। यू विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ लेबर लॉस एंड 3 एनवायरमेंट लॉस। सो व्हाट लेबर लॉस आर देयर दैट आई हैव मेंशन हियर, व्हाट आर द एनवायरमेंट लॉस आर देयर दैट आई ऑलरेडी मेंशन हियर, कि आपको ये लेबर लॉस और ये एनवायरमेंट लॉस में आपको मुक्ति मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन I have already mentioned, company details, email ID, certificate of incorporation, then partners details, authorized representative details and all those things. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो आपको पिच डेक के लिए बुलाएंगे तब मैंने आपको बताया कि आप अपने कंसेप्ट खाली मत बताना, उसमें मार्केट और आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी क्या है वो भी बताना, क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि ये बंदा जो है वो एनालिसिस करके आया है कि वो मार्केट में कौन सी जगह पे है, एट व्हाट पर्टिकुलर ही इज स्टैंडिंग एट द मार्केट व्हेन ही इज सेइंग इन 2020 itself. So these are all regarding startup and all those things. And the grant, there are so many things, but in the period of 1 hour I cannot cover. So seed funding से या एंजल इन्वेस्टर से या आगे जाके आपका प्रोजेक्ट जब स्केल होता है तब वेंचर कैपिटलिस्ट से भी आप ये फंडिंग कर सकते हो। स्टार्टअप इंडिया से या अभी SSIP फेज 2 आ रहा है, स्टार्टअप गुजरात से भी आपको ये फंडिंग, स्टेट गवर्नमेंट की भी अच्छी स्कीमें हैं उसमें, सो आप उसमें काम कर सकते हो। सो माय कंक्लूजन इज कि the problem taken by a young diploma engineer or a degree engineer of any branch, because now there is a multidisciplinary approach is going on for research and that is appropriate, that problem is solving
any social issue, any market issue, any problem regarding to the energy deficit of the nation, any problem regarding the environmental pollution of the nation, then obviously your research or your work is working towards a huge contribution towards our society and country. कल मैं यूजीसी का एक कुछ लेटर देख रहा था. Then there people are thinking to take it manually, that if your research work is working towards some application part, because engineering is application, then and then your work will be काउंटिंग. लेकिन जब स्टूडेंट किसी चीज पे जब आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको पीएलसी आईओटी बेस्ड स्ट्रीट लाइट बताया, आपको देखना है कि मार्केट में कौन कौन है जो ये काम कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, थ्रू पैटर्न्स, थ्रू पेपर्स, हाउ वुड आई इंप्लीमेंट इट, how would I check my component list, what will be my purchase processor, what will be my future market for next, not only for that year but next 5 to 10 years, what will be my future gap analysis for there, what will be my time of completion of the project and planning of that, how I would be implementing that project, एंड व्हाट आर माय मार्केट सेगमेंट. एज मैंने पीएलसी आईओटी में बताया कि मेरा मार्केट सेगमेंट हर केस में अलग अलग रहेगा. अगर मैं हाईवे में इंप्लीमेंट करता हूं तो वो मार्केट सेगमेंट जो है वो उसमें 11 में से वो किसी कुछ आइटम को ही इंप्लीमेंट करेगा. अगर मैं कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो ऑब्वियसली वहां पे जो सेंसर लगे हैं वो उसकी जो फायर सेंसर है या उसमें फॉग सेंसर है या कुछ वो बढ़ जाएंगे उसमें. सो दैट डिमांड्स ऑन हाउ पीपल आर होपिंग दैट आई शुड बी putting the things there. Similarly, आपका जो रिसर्च है वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च जो है वो पिन पॉइंट पे पिच करना चाहिए. ये पिन पॉइंट पे मैं पिच करूंगा तो ही मेरा काम जो है वो होने वाला है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटर में मैंने आपको प्रॉब्लम स्टैटिक स्टार्टर में मैंने आपको प्रॉब्लम डिफाइन किया. आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन दैट कॉस्ट ऑफ द single phase timer cannot be replaced by an electronics timer that you are already studying in your studies. Then I will think it in which mode I have to operate it. Fine. How I'll be operating that, what is the internal construction of that IC, how it will be operating, and if all this collective effort are made, then obviously your research, your work, your journey as an engineer, your journey as a diploma engineer or degree engineer will hit to a common target that is known as prosperity of society and nation. Thank you very much, students. I have shared some ideas. The patent which I shown you, it was just filed in 3 months ago, and obviously it is published, and this is my second patent actually. First patent was based on electrical vehicle battery charger, and this was based on IoT based street light mechanism, but the target groups are different. As I told, the market group is already different. Hitul ma'am, over to you. Yes. Many questions I will love to answer. I'll be happy to answer that questions. Yes, sir. I have received 2 questions. One Yes. was which are the sources of state funding for startups, but it is just covered by you. Okay. So we'll get the answer. Now, the second one is what are the benefits of prototyping? Okay. What are the benefits of? हाँ, मैं वो पहले क्वेश्चन भी लेना चाहूंगा क्योंकि शायद मैंने कुछ जल्दी में बोल दिया है, तो वो अगर उन्होंने सुना नहीं है. से फंडिंग के लिए पहले तो ये डिसाइड है कि यार मैं मेरी खुद की इनकम में से या फैमिली रिसोर्सेज में से मैं कितना उसमें इन्वेंट करना चाहता हूं. दैट इज वन टाइप ऑफ फंडिंग. फाइन. या दूसरा टाइप का फंडिंग है आपके जो एंजल इन्वेस्टर्स है और बाद में आपके वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे जो फंडिंग के लिए. इसमें स्टूडेंट्स इसमें पिच डेक प्रेजेंटेशन रहता है. सपोज जब एसएसआईबी गुजरात में ये पिच डेक प्रेजेंटेशन हुआ था, देन आई वाज वन ऑफ द इवेंट आई वाज होस्टिंग. सो वेयर व्हाट ऑनेस्टली आई फेल्ट देयर एक्चुअली कि मेनी स्टूडेंट्स, किसी ने ड्रग मेडिसिन पे काम किया था, किसी ने कुछ और चीज पे काम किया था, किसी ने कुछ इलेक्ट्रिकल चीज पे काम किया था, लेकिन एवरीवन वाज हैप्पी टू शो देयर ओन पोटेंशियल ओनली कि सर मेरे में ये है, मेरे में वो है, मेरी चीज इतनी बढ़िया है. लेकिन जब उसको पूछा गया कि मुझे आपके मार्केट में कंपटीटर्स कितने हैं और उनकी बेस प्राइस क्या है, उनके फ्यूचर्स आपके फ्यूचर्स जैसे है कि नहीं, और आपकी प्रमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो बताइए, तो आंसर शायद 10 में से किसी एक बंदे ने दिया था. तो जब मैंने आपको अभी प्रिवेंटर का सर्किट बताया, तो आई हैव एन एनालिसिस देयर कि 500 से लेके 1500 से लेके 3000 से लेके ऑन वेरी वर्सेटाइल प्रिंसिपल्स प्रिवेंटर आर अवेलेबल इन मार्केट. माय सर्किट वाज हैविंग स्टैटिक स्टार्टर एंड प्रिवेंटर बोथ. प्रिवेंटर वाज कॉस्टिंग 20-20 रुपए के 3 ट्रांसफॉर्मर थे, 60 रुपीज. 10 रुपीज की रिले थी, सो इट वाज 120 रुपीज.
But yes, for market penetration, the actual working which is shown in the figure, it still has to be upgraded for a continuous working, for a reliability issue. So ये आपके पहले प्रश्न का जवाब था. अब किसी ने बताया कि प्रोटोटाइप क्या है. तो जब कोई आइडिया हेतल मैम के पास लेके आता है कि मैडम मेरे पास ये आइडिया है, क्या हम उस पर काम कर सकते हैं कि नहीं, तो जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया कि वो आइडिया फिजिबल है कि नहीं वो चेक करना है, तो वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज में जाते हैं. लेकिन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज में आइडिया तो वर्क हो गया. जैसे आप मोबाइल ऐप ले लो, आपने मोबाइल ऐप तो बना दिया, लेकिन मोबाइल ऐप के, मान लीजिए अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चल रहा है, तो किसी ने बैटरी स्वैपिंग पे ऐप बना दिया, लेकिन वो ऐप के सारे फ्यूचर्स जो है वो प्रॉपर्ली फ्लो हो रहे हैं. तो वो सब इंटरनल स्टेक होल्डर जो उसमें आपको एडवाइसेस देंगे आपके यहाँ के, और जो आप पीओसी करोगे, तो वो जर्नी आपका जाएगा प्रोटोटाइप में. अब कोई कोई बंदा ऐसा डिसाइड करता है कि वेरी कॉन्फिडेंट है, वो किसी की एडवाइस भी लेता है. देयर आर द स्टार्टर्स who has been launched after the prototyping was completed, and majority of the startups sometimes they still wait for MVP also, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में. जो मार्केट सेगमेंट के साथ लोग जुड़े हुए, उनकी एडवाइस लेके इसमें हम इसका क्या फ्लो यूजर को पसंद आएगा, ये कैसा रहेगा, ये स्क्रीन कैसा रहेगा, एंड देन दे डिसाइड टू पेनिट्रेट द मार्केट. सो POC, prototype and MVP, all three are very much important, but time of market penetration and appropriate feedback and improvement is also important. किसी बेसिक चीज को आप लेके चले गए तो पता चला कि मार्केट में से रिटर्न आने का समय हो गया. I hope so I justified the answer for which the question was asked. Yes, sir. Yes, sir. Any more questions? No, sir. So there is जब no आप questions from audience. Yes, sir. any more questions from any faculties, ma'am? No, sir. सो स्टूडेंट्स के लिए मैम एक लास्ट मेरी एडवाइस है ये खत्म करने से पहले, जो मैंने इतनी 18 साल में जो मैंने जो ड्रॉबैक देखे है. नंबर 1, स्टूडेंट जब IC 555 या प्रिवेंटर या किसी ओपन डेल्टा प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो वो खाली थियोरेटिकल एक्सपेक्ट के बेस पे ही पढ़ते हैं. They do not study it in terms of practical application. But if that study is tested okay in lab, अगर वो प्रैक्टिकल लैब में आपने परफॉर्म किया है, वो ब्रेडबोर्ड पे परफॉर्म किया है या आपने PCB पे परफॉर्म किया है, तो आपको पता चलेगा कि IC 555 जब पढ़ा था उसकी जगह IC 555 के 150 एप्लीकेशन तो मिनिमम है मार्केट में, एनालॉग में भी, और ऐसे आपको डिजिटल में भी एप्लीकेशन मिलेंगे. सो तब आप पढ़ते हो, तब आपको वहां से आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन याद आना चालू हो जाता है कि इसको लेके मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको लेके मैं ये भी बना सकता हूँ, इसको लेके मैं ये. तो ये आइडिया कब आता है कि जब आप डिप्लोमा के करिकुलम में या डिग्री के करिकुलम में जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसको एप्लीकेशन बेस्ड लेना चालू करेंगे, तो वो काम आसानी से हो सकता है. और साथ में अभी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के साथ उसका मैनेजरियल पार्ट कैसा है, उसका मार्केटिंग पार्ट कैसा है, अगर उसको दोनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, मे बी सम फैकल्टी मेंटर्स आर देयर, मे बी सम एक्सटर्नल मेंटर्स आर देयर, अगर बच्चे उसमें ब्रिलियंट नहीं है तो, लेकिन अगर वो लेवल पे अगर स्टूडेंट को लेके जाते हैं, तो वो फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है कि दैट कैन बी यूजफुल टू द सोसाइटी एंड नेशन. सो मैं आशा रखूंगा कि आपके यहाँ जैसे एनवायरनमेंट का काम हमारे यहाँ भी बहुत चलता है, वी हैव इको क्लब एट अवर इंस्टीट्यूट, आपके यहाँ भी ये काम चलता होगा for plastic waste management system, then for green ecosystem, for smart dustbins. So obviously all our efforts will be combined together, it will produce some brilliant results for our nation in upcoming years. That is actually the target in both the sectors, in energy as well as in environment. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you for giving the answer and sharing very good information. Now, I would like to just conclude this webinar. So, I heartily thanks to Parul University for giving this platform to arrange webinar to share knowledge. Thanks to our webinar team. Thanks to our principal madam to motivate to arrange this type of activity, which is very helpful to students as well as faculties. My heartfelt thanks to our expert Dr. K. Mukherjee sir for giving his precious time and sharing useful and helpful information regarding projects and startups. I am sure that the example shared by sir will help final and pre-final year students to select proper projects
also given some ideas how to select projects and go for the startups. So if students have select a good, they can go for startup, then the purpose of our this webinar will be fulfilled. So thanks to all our viewers for being with us during this webinar. Thank you all. So if permit, we will end this webinar, sir. Okay, sir. Thank you, ma'am. With one last advice, after all these things, students, it will come for report or patent publication or paper publication, where you should be able to write in a manner that the flow is continuous and the data is without any plagiarism. अगर आप कहीं से लेते हो तो वो आपको ब्रैकेट में रेफरेंस उसका मेंशन करना है, क्योंकि आपका बेहतरीन काम तभी एक्सेप्ट होगा जब आपको उसको बढ़िया तरीके से आप किसी को बता पाएंगे. So that data should obviously been plagiarism checked, and it should be in a systematic flow with continuity, with a preface and with the proper literature review. Thank you, ma'am. Thank you, Parul University, for providing me an opportunity. And I'll be hoping that so many students of Parul University will be taking some projects of solar pumping and smart dustbins and the project based on energy conservation and management in the future that will really be helpful to society and nation. Thank you. Thank you, sir. Regis, sir, can we leave? Hetal ma'am, should we leave? Yeah, sir. You can leave. Fine. Jitesh, sir, can I end the meeting?